Welcome to Vanik Smart Class, and here it is. We have another session on statement conclusion. Let's check today's curriculum. जो planner थिला हमरो सेटा चेक करिवा को पर्यंत हमें पहुंची सारचे. Statement conclusion we have covered coding, decoding, letter number symbol series, silogs, counting figures we have completed. Then analogy test, blood relation, direction, cube, dice, calendar, clock, logical Venn diagram, odd man out, setting arrangement, then finding missing character, statement argument we have completed, ranking order test we have completed, statement assumption we have completed, course of action we have completed. Now this is the turn statement conclusion. Statement conclusion आज टॉपिक तो समस्त को इनफॉरमेशन दिया जाउछि कि समस्ते निजर पेन पेपर सहित रेडी रहंतु सो दैट वी कैन लर्न समथिंग एट लीस्ट. These all are the dictionary meaning of conclusion. What is a conclusion? This is the end or close final part, summing of the points in statement, opinion or decision raised. A result, issue or outcome, settlement or arrangement. Final decision, the judge has reached his conclusion. It means the decision can be concluded as a valid conclusion. A result, deduction or inference. This is also synonymous of conclusion. Logic, a proposition concluded or inferred from the premises on an argument. Argument true jaha, after summarize, criticize and analyze the result part of anything can be considered as a conclusion. तामाने आरो में जदि कहिबा conclusion रो synonymous सब कोन अछंती ताले मु कहिबी जे एटा end part. Then we can say this is judgment, right? Judgment, then verdict, decision, outcomes, result. This all our friends can be treated as a valid conclusion. Name, I mean synonymous of conclusion. This all are. So it is resting point of the argument. It is something that is explicitly stated in the passage. The common pointers to a conclusion are hence, thus, therefore. So ये समस्त जिनस को आमे एनालाइज करिवा एबे. समस्ते ये पॉइंट गुड़ा को टिके मार्क कर दियंतु. हेलो हेलो जीबे व्यस्त हो. So here it is, friends. This all are the examples we are going to solve. ता पूर्व आमे मने पकेबा आमे जेहेतु कंक्लूजन सॉल्व करूचे. कंक्लूजन रो फॉर्मेट रे आमे दुईटा टॉपिक पढ़ी सारिचे. इनइक्वालिटीज आमे पढ़ी सारिचे एंड सिलॉग्स. लेट्स चेक. इनइक्वालिटीज आमे पढ़ी सारिचे ना हमको आगो को पढ़िबो टिके चेक कर दवा. इनइक्वालिटीज आमे 25th नंबर टॉपिक रे पढ़िबा. This is also the format of statement conclusion. And here it is, we have somehow completed silogs, statement, conclusion format रे syllogism भी अछन. So एबे हमें एक कथा कहबा जे जदि मु conclusion को मूव करिया को चाहूची, then how can we skip silogs? Silogs को माने पकेबा हमर जो समरे स्टेटमेंट दिया जाइथिला sum A or B, sum B or C, suppose all C or D. Number 1. Diagram बनेवा में. Diagram is nothing but the analysis, a pure analysis of the statement. Some A or B, some B or C, all C or D. Conclusion जदि मु लिखिली some A or C ताले इटा false हमारा कारण होची, कारण इटा result part न होई पारे because there is lack of connection. ताले मु कोई भी जे जदि कनेक्शन लैक करूची ताले कंक्लूजन टा फॉल्स होची. एक कथा सिखिवा दरकार. आमे जो समय कंक्लूजन सिखिले, आई मीन सिलॉग सिखिले, से समय बोध हुए कंक्लूजन रे थिबा समस्त डेफिनेशन रो आवश्यकता नथिला. So now this is important because there is no short tricks to qualify the logical part statement conclusion. You need to
go through all those statements properly. You have to find out the meaning of the statement properly. Then only we can conclude some conclusions. Otherwise, this is very difficult. Without getting the meaning of the statement, this is worthless to go for the conclusions. So that's why some ARC this is false is because of there is lack of connection between A and C. But friends, if I'll see for some B or D, then it will be true. This is true is because of, look at it, all C are D, some B are C, definitely some part of B to be the part of D. That's why it becomes indirectly that is available in the whole information that we have discussed in the statement. So keep in mind why this is true. Now the point is why this is true. But think about Silox. आमे जो समय Silox पढ़ुले से समय some B or D true कौन पे हेला खोजु नथिले कौन हबो खोजुथिले some B or D true हबो ना false हबो एबे मु क्वेश्चन पचरछु why this is true because there is a connection between B and D, that's why this is true. So what we have learned from the definition of the conclusion that after analyze, criticize and summarize, the result part of anything can be considered as a conclusion. So जदि हमें analyze कले, criticize कले, summarize कले, एते कथा एटी दरकार तो नहीं बिल्कुल. एटी हमें connection मिलिला. ता माने एटा indirectly qualified. Indirectly qualified माने B and D is indirectly qualified some part. That's why this is true. Very simple. Now think about it. Money plays a vital role in politics. अपन पूर्व किसी क्वेश्चन रही गला की No, everything settled. Now this is the very first example. Money plays a vital role in politics. Now friends, think about Silox. Silox रे हमें कौन करते ना डायग्राम को रिप्रेजेंट करूले. डायग्राम रे बने दूले स्टेटमेंट को डायग्राम रे कन्वर्ट कर दूले. That was possible. But एबे देखो तो जो टाइप रो लिखा जो आसुदा समय अपन को पैसेज भी मिलिबो. ये सबू जिनस गुड़ा को पिक्चर रे कन्वर्ट करिवा. This is too difficult. That's why never expect कि आमे पूर्ण या को पिक्चर रे कन्वर्ट करिवा. आमे तार मीनिंग जानिबा. मीनिंग जानिला परे आमे कोडी ना कोडी मीनिंग जानिला परे आमे ताकू कन्वर्ट करिवा कोतरे आंसर रे डायरेक्ट. So here it is friends, money plays a vital role in politics. The poor can never become politicians. There is nothing said about poor. That's why this is false. All the rich men take parts in the politics. जितो बड़े lack of information वाला, lack of information. सबु बड़े लाइन टा मन रखिए. जदि contact lack है ला सेट पे B और A और C. जदि मु कहली A some part B some part C एमितिया बने देली और A C रो contact बचाली. एटा false होबार कारण होची कोटी ना कोटी lack of information. We don't have any idea about A and C. That's why this is false. But मु जदि कनेक्शन मिलुची ताले तो खोजे पड़िबो. कनेक्शन मिलुची माने सेटा ट्रू हो जरूरी नहीं, बट कनेक्शन जदि लैक करची डेफिनेटली फॉल्स. सो पुअर कैन नेवर बिकम पॉलिटिशियंस. दिस इज सिंपली आउट ऑफ द कंटेक्स्ट. ऑल रिच मैन, देयर इज नथिंग सेड अबाउट रिच पर्सन्स. दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स. बोथ आर फॉल्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन समस्त को पई 2 मिनिट लेखा समय मिले तो मु ऑनलाइन अछि. समस्त जो माने भी ऑनलाइन अछंती से माने निज निजरो व्यूज देवे से माने निज निजर आंसर कहिबे ता परे मु सॉल्व करिबे. सो टेक 2 मिनिट्स. So go for the answers. Here it is. Most of the Bihari boys are attracted towards government jobs. So in Bihar, jobs are very less. There is no information about whether jobs are very less or more. That's why this is false. There is no attraction towards government jobs among boys of other states. Now friends, think about other states. The boys of other states. We have idea about the state of Bihar and their interest areas of the boys of those
boys belongs to Bihar only. But now we don't have any idea about other states, that's why this is false. Both are incorrect. Correct answer is again D. Next question. 2 minutes, friends. Your time starts now to qualify this question number 2. Those hilly areas will be declared backward where forest area does not exist. That is DOES. Wrongly written DOSE. Dose is wrong one. Does not exist. Hilly forest areas are not backward. Hilly forest areas are not backward. This is completely true. Because to declare backward areas, we need hill that should not be covered with forest. That's why this is true. In backward areas, hills are without forest. This is also true. The same written in different way. Conclusion is nothing but to write the statement in different way. So this is different way, of course, and both are correct. Correct answer is option number E. Next one, 2 minutes you have. Here it is. In a one-day cricket match, the total runs made by a team were 200. Out of this, 160 runs were made by the spinners. 80% of the team consists of spinners. We don't have any idea about whether the team consisted of 80% of spinners, because only one spinner can also hit all the runs. I mean, more than 90% runs can be hitted by the spinner, no problem. If he or she be an all-rounder, then anything can be possible. The opening batsmen were spinners. Still, this is unknown whether opening batsmen were spinners or not, and this is not even mandatory कि ओपनर जे थिबे ही से ही 80% और जो भी परसेंटेज रन करिवे जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं. So finally, both are wrong one, and D is the right answer. We'll move for the next question. Here it is the next one, and 2 minutes you people have.
Government has spoiled many top-ranking financial institutions by appointing bureaucrats as directors of these institutions. Government बहुत गुड़े financial institutions spoiled है ये जी government रो सेमाने कौन ना bureaucrats को सेमाने करो chief बनेला पौरे तामाने जोना पड़ुची कि सही activities जो सेमाने करो grip बहुत ही lack करथिला. Government should appoint जदि हमें कोनोसी problem कोई ले पिले एटा ध्यान देथिबे आउ जदि आमे तार सॉल्यूशन कहूचे और एग्जैक्ट सॉल्यूशन कहूचे बा रिलेटेड सॉल्यूशन कहूचे जोतर की सॉल्यूशन ही परिवार चांस अछि देन आई कैन से व्हाट इट्स अ करेक्ट कंक्लूजन बिकॉज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ अ प्रॉब्लम इज अ सॉल्यूशन हमको गवर्नमेंट आमे डॉक्टर पाखो गूगल ले हमर प्रॉब्लम जणले और डॉक्टर गोटे प्रेस्क्रिप्शन लिखले एबे प्रेस्क्रिप्शन ता हमें कोनोसी सॉल्यूशन कोइ परिबा. So prescription can be a conclusion of all those diseases and all this activities. So हमें कहबे जे एटा गोटे प्रॉब्लम टा स्टेटमेंट रे जा लिखा अछि तो एटा जल्दी गोटे सॉल्यूशन हैला ताले हमें ताको करेक्ट कंक्लूजन कहबे. गवर्नमेंट शुड अपॉइंट डायरेक्टर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द एक्सपर्टाइज ऑफ द पर्सन इन द एरिया ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस रिलेटेड जहार आइडियाज अछि एक्सपर्टाइज अछि से मानको सेतरे अपॉइंट दबा उचित. Then, the director of the financial institute should have expertise commensurate with the financial work carried out by the institute. This is also correct. दुईटा का solution, दुईटा का conclusion. कहीं ना statement टा गोटे problem थी. Next question, 2 minutes you people. Population increase coupled with depleting resources is going to be the scenario of many developing countries in days to come. तामाने कौन जना पड़ला जो टाइप रो पॉपुलेशन बढ़ी चलची रिसोर्सेस डिप्लेट होची कंट्री रो जो माने रिप्रेजेंटेटिव अछंती से माने को मैनेज करबा डिफिकल्ट हो. The population of developing countries will not continue to increase in future. Wrong information. There is no sense of this conclusion. It will be very difficult for the government of developing countries to provide its people decent quality of life. आमर लाइफ सहित natural resources रो कोनोसी ना कोनोसी प्रकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन रोच. तो जदि एई टाइप रो पॉपुलेशन बढ़ी चलिवो आ आमर रिसोर्सेस गुडा को डिप्लेट हो ताले कंट्री रो जे रिप्रेजेंटेटिव अछन सरकार जे अछि तांकू असुविधा हो डिसेंट क्वालिटी लाइफ दवा पाई. राइट. So finally this answer is said to be true of question number 5. Point number 2 is true. Correct answer is option number B. Next question. Again you people have 2 minutes to crack. Primary school going children in urban India have now become avid as well as more regular viewers of television, even in household without a TV. As a result, there has been an alarming decline in the extent of readership of newspaper. देखो टीवी देखिवार जो बयस थाए से बयसटा एटी एप्लीकेबल होनी बोली नारेटर टिके वरीड अछंती प्राइमरी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन माने एते अधिक टीवी देखुचंती सेही तुलना रे माने
रीडरशिप जो माने पेपर पढ़िवार कथा से समय से माने टीवी अधिक देखुछंती तो एटी नैरेटर टिके बहुत ही वरीड अछंती तो कौन हम ना मेथड ऑफ इंक्रीजिंग रीडरशिप ऑफ न्यूज़ पेपर शुड बी डिवाइस ठीक अच्छे न्यूज़ पेपर रे छोट पिलांको पई आर्टिकल्स रहा दरकार कॉमिक्स रहा दरकार कार्टून्स रहा दरकार ये सब रहिले पिला माने टिके न्यूज़ पेपर आडको अट्रैक्ट हेबे सेति पई नंबर 1 टा ठीक अछि जेतु सॉल्यूशन लिखा छै टीम ऑफ एक्सपर्ट शुड बी सेंट टू अदर कंट्रीज टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ टीवी on the readership of newspaper. This is absolutely wrong because we don't need the impact of TV. We have already heard about the impact of TV. That's why. So finally, the correct answer of this question is said to be A. We'll move for the next question. Here it is, next one, and this is 2 minutes to qualify. जो माने भी ऑनलाइन अछंती से मानन को रिक्वेस्ट करा जाउची से माने आंसर दियंतु समय दियंतु क्वेश्चन को सो दैट कि एटा क्लैरिटी आसो आम यहाँ फंडामेंटल पार्टा डिस्कसन करुचे क्वेश्चन प्रैक्टिस सहित कारण आर एक्स्ट्रा तो कौन माने सर्ट ट्रिक्स न थाए तेणुक क्वेश्चन गुड़ाक बहुत ही सहज क्वेश्चन जानी शुणी दि जाइए सो दैट कि टॉपिक रे एंट्री करा जाय पारे In Japan, the incidence of stomach cancer is very high, while that of bowel cancer is very low. But the Japanese immigrate to Hawaii. This is reversed. The rate of bowel cancer increases, but the rate of stomach cancer is stomach cancer reduces in the next generation. तमाने जना पड़छि कि एटा दुई टाइप रो कैंसर कथार्ता होछि और कोटे अधिक रहउछि कोटे कोटे कम रहउछि नेक्स्ट जनरेशन. So all this is related to nutrition. खाद्य पाई सब एमती प्रॉब्लम होछि द डाइट्स ऑफ जापान इन हवाई डिफरेंट देन दोज इन जापान हवाई रे आ जापान रो खाद्य जो न्यूट्रिशन गुडा को सोडा डिफरेंट अछि बोली कहै छै से पे एमती प्रॉब्लम भी होछि बोली लिखा जाय छै ओके सो द सेम डाइट एज इन हवाई शुड बी प्रोपगेटेड इन जापान आल्सो कोन हो तमरे से कैंसर टा रिवर्स हो इतरे सॉल्यूशन तो आसिलानी bowel cancer is less severe than stomach and this is also wrong because we don't have any idea about the severity of both of the cancers. That's why both are incorrect. सब बड़े मन रखिए conclusion टा गोटे fact टा. It's a kind of post case of the discussion of the statement. जल्दी एटा related न होला ताले एटा false होगा पाई हमें आरंभ रू कथा इतने. So correct answer should be D of this question. Neither false. Next question. Here it is. 2 minutes you people have. The government-run company had asked its employees to declare their income and assets, but it has been strongly resisted by employees union, and no employees is going to declare his income. Government रे जो सब कंपनी अच्छे government रो से सब कंपनीज रो employees मानकु से मानकर income asset declare करिया पे कुआ जाय छै किंतु employees union एटा को resist करूछि एतरो हमें कोन assume करिवा कि से मानकर extra income रहउछि सेति पई से माने resist करिवाटा स्वाभाविक किंतु हमें assumption solve करने assumption is a pre case while conclusion is a post case. So the employees of this company do not seem to have any additional undisclosed income besides their salary. एक कथा कुआ जाय परिबो नाही
because they are resisting it, right? जदि रेजिस्ट न करिथांते ताले ए कथाटा ठीक हे थांता निश्चित भाव बट एबे रेजिस्ट करूचंती स्ट्रांगली रेजिस्टेड ने अटकुचंती एटा ठीक नय बोली कहउचंती कोन बाय ठीक नय जति इनकम सति जदि तुमरो एसेट अछि बा खर्च जदि तुमे प्रूफ करि परछो तले किछि प्रॉब्लम नाही तो रेजिस्ट करूचंती माने एटा केबे कॉन्ट्राडिक्टरी हो ठीक अछि The employees union wants all senior officers, there is no information. Finally, both are wrong one. Correct answer is option number D. We'll move for the next question. Here it is the next one and 2 minutes you people have again. Monitoring has become an integral part of the planning and social development programs. Monitoring रो आवश्यकता बहुत अधिक अछि काहे ना monitoring बिना follow up रे कोनोसी काम ठीक से ही परिबो नाही. It is recommended that MIS be developed for all programs. MIS management information system को develop करिवा उचित सब काम पई. This is likely to give a feedback on the performance of the functionaries and the efficacy with which services are being delivered. एटा निश्चित भाव रे गोटे feedback दबो कि कामटा केमिति होउछि performance शो करि परिबो. All the social development programs should be evaluated. Correct one. सब जगह इवैल्यूएट होबा उचित काहे कि ना मॉनिटरिंग कथा लिखा जाय छै. सो आमे नुवा किछि लेखु ने आमे स्टेटमेंट को गोटे अलग शब्द रे परिप्रकाश करूचे. That is nothing but a conclusion. Number 2, there is a need to monitor the performance of the workers. That's why efficacy ए कथा लिखा जाय छै. Feedback on the performance of the functionaries and efficacy with which services are being delivered. ए कथा लिखा जाय छै. दुईटा जाक ट्रू रिसर्च. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई. नेक्स्ट हियर इट इज 2 minutes in total. क्लास रछि रे मु कथा होछि क्लास पर हला मु क्लास पर कथा होछि. The TV programs telecast especially for women are packed with a variety of recipes and household hints. A major portion of magazines for women also contain items mentioned above. ता माने जना पड़छि कि हमकु टीवी प्रोग्राम आ मैगजीन्स रे एई सब टाइप रो रेसिपी वगैरह टाइप रो जिंस जदी अधिका परिमाण रे देखौछि ता माने हमें कहबा जे एई सब ऊपर बेसी इंटरेस्ट होछि. ता माने टीआरपी एई पॉइंट रे अधिका रहउछि माने मानकर इंटरेस्ट एरिया सेइथरे अधिका रहउछि. A women are not interested in other things. हम पाखरे कोनोसी इंफॉर्मेशन नाही. An average of women's primary interest lies in home and especially in the kitchen. ठीक अछि. एवरेज माने ता माने जणा पड़ी गेला जे मैक्सिमम वुमेन जो माने अछंती से माने एई सब रेसिपीज हाउस होल्ड हिंट्स एई सब विषय बेसी ध्यान दउछंती. सेति में हमें कोई परिबेटा. So finally number 2 is correct one. So B is the right answer. We'll move for the next one. Total time allowed 3 minutes because 2 questions are there. Just qualify and tell me the answer.
The distance of 900 km by road between Bombay and Jaffna will be reduced to 280. तामाने रोड रे इटा 900 एलाड़ को 280 km by ship. तामाने सी बेल्ट रे और रोड रो डिस्टेंस कमी जाइछबो. This will leads to a savings of rupees 7.92 crores per annum on fuel. एतिको पाखापाखी दाम फ्यूएल रे सेव हो ए कथा कह जाउछि. So transportation by sea is costlier than by road in Bombay. सी टा कॉस्टलियर नुहे. सी रे गले एतिक पैसा सेव होबो ता माने सी बेल्ट रे एटा सस्ता अछि. एटा किंतु जस्ट रिवर्स लिखा है. द ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज कॉस्टलियर. इट्स रॉन्ग. सी इज चीपर देन दैट बाय रोड जो लिखा था तालगु ठीक होई थाते. फ्यूएल मस्ट बी सेव टू ग्रेटेस्ट एक्सटेंट. ठीक अछि. सो बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नंबर 2, द मैनेजर humiliated Vivek in the presence of his colleagues. The manager did not like disliking फास्ट टाइम ह्यूमिलेशन रू कनक्लूड करिवा सहज नुहे. माने करेक्ट सीक्वेंस बनुनी कारण फास्ट टाइम हिची सेकंड टाइम हिची तार जेहेतु मेंशन किछि करा जायनी. प्रथम दाम भाबिया जे ह्यूमिलेशन इज अ फास्ट टाइम. सो फास्ट टाइम ह्यूमिलेशन दैट मे बी अ लेसन टू दैट कैंडिडेट और दैट कोलिग दैट मे बी. तेणु करी आमे इटी डायरेक्टली ताको डिसलाइकिंग को कनेक्ट करि परिवा नाही. विवेक वाज नॉट पॉपुलर होबा न होबा सेतरे कोनोसी कनेक्शन ह्यूमिलेशन सहित नाही. So correct answer of the given question is option number D. दुईटा जाक false है. So next question. 3 minutes total. Excuse me. Women's organizations in India have welcomed the amendment of Industrial Employment Rules 1946 to curb sexual harassment at the workplace. Sexual harassment of women at workplace is more prevalent in India as compared to other developed countries. There is no comparison at all. कि इंडिया रेटा अधिका अच्छी कम अच्छी से कौनसी आम निश्चित भाव में कहवा जे कौनसी कांटेक्ट नहीं. नंबर 1 false. Number 2, many organizations in India will stop recruiting women to avoid such problems. There is no sense of this line. So both are incorrect. Correct answer is option number D. Next, nowadays life has become very difficult without a mobile phone. Total number of mobile manufacturing companies is increasing day by day. आरो किसी contact नहीं. जदियो contact अच्छी बहुत ही laterate. I mean, we need straightforward line from the statement. This is lack of coordination. I can say. माने यार contact आ संगे जोड़े कहले बहुत गुड़े कथा कहया पड़ियो. माने बहुत गुड़े contact आने पड़ियो. ता पर जेंगे एटा संभव. ता माने एटा को हमें directly answer करि परिबा नै. Mobile has become an integral part of the life. It's absolutely correct. Number 2 is B. Final answer of the given question is B. Next, we have 3 minutes more.
Nation X faced growing international opposition for its decision to explode 8 nuclear weapon at its test site. Nation X faced growing international opposition ताको फेस करिया पड़ी. The citizen of the nation favored the decision. Citizen मानकर कोनोसी link A type रो decision रे नहीं. There is no connection. Some powerful countries do not want other nations to become as powerful as they are. ठीक कथा लिखा है. किंतु जेतोले मु स्टेटमेंट रे कनेक्ट करिवे, how is it possible to decide whether here it is those people, those country who is facing opposition, who are facing opposition is powerful, or those who are opposing is powerful, or those having nuclear weapons are powerful, or those who are economically powerful is globally powerful. There is lack of connection in number 2 also. This is wrong one. In highly centralized power structure in which even senior cabinet minister, our answer hame qualify kari sarche, D is go neither nor, are prepared to reduce themselves and ready to give yes men views are primarily intended to anticipate or reflect prime minister's own performances. तमाने centralized power structure रे ए टाइप रो इशू हुए. कोन इशू न समस्ते निजरो मनमानी करि परिबेन. सेंट्रलाइज पावर जनकर माने बहुत ही कम जनक पाखरे पावर रहबो. जो माने भी रहिले स्पोक्स पर्सन से माने निजको कम शो करंतु चलिबो, किंतु पार्टी रो तरफदारी करिया को पड़िबो. यस मैन हो रे हो नाइ रे नाइ करिया को पड़िबो. प्राइम मिनिस्टर ओन परफॉर्मेंस मानकु परफॉर्मेंस जोड़ा भी अच्छी पार्टी रो परफॉर्मेंस हो, प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस हो, से माने निजको कम शो करी तमने कुर्सी बंचेवर प्लान रे से माने भलो गया पड़िबो. ओवरऑल से माने सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर इवन prepared to reduce themselves and ready to give yes men views. It's clearly referred the same. The minister plays safe by not giving anti-government views is correct one. The prime minister does not encourage his colleagues to render their own views. Own views दबा पाई कुआ जाइछि, किंतु anti-government views दबा पाई कुआ जाइनि. That's why this is wrong one. Does not encourage, no. Encourage to his colleagues to render their own views, but that should not be anti-government views. It's wrong one. Number A is the right answer of this question. We'll move to the next one. Here it is next one and 2 minutes again. 3 minutes, 2 questions as there are 3 minutes. Here it is, National Aluminium Company has moved India from a position of shortage to self-sufficiency in the metal. Previously, India had to import aluminium. Self-sufficient करिछि shortage रू बहुत बढ़िया काम करुचंती नालको. Previously, India had to import aluminium. That's why. With this speed, जदि इस speed रे चलला ताले India कोन हबो ना, it can soon become a foreign exchange earner. कहीं ना अधिक आसिले से export करिया start. आमे जेतले इंडिया को मूव करिचे को आउची ता माने इट्स अ काइंड ऑफ कंपैरिजन. ता माने इंडिया भलो पोजीशन को आसी, भलो पोजीशन आसी माने बिक्री करछि. जे जेते बिक्री करिवो से सेते अधिक धनी हो. जे जेते अधिक किनिवो से सेते धीरे धीरे लूज हो, तार इकोनॉमिकली से डाउन हो. ता माने केबे भी कस्टमर इकोनॉमिकली साउंड को जाई परिवो नाही एज कंपेयर्ड टू अ सेलर. सो सेही एग्जैक्ट समय रे आपन को ठरू से पैसा नउची ता माने आपन ताको पैसा देले जा बाबू पैसा जाउची से धनी होची. ता माने ए कथा जानि रखिबा दरकार बिजनेस रे. रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन.
Pointed and precise expression comes through extensive writing is correct one. Extensive reading makes a complete man. This is also correct. Both are correct in 7. That's why E. Both are correct in question number 8. That's why E. Both are E in this page. So we will go for question number 10 up to. This 2 will be the last question, of this session. 3 minutes total. Your time starts. Jet plants has thick leaves and it's require little water. All plants with thick leaves require little water. We don't have any idea about all plants. Jade plants may be grown in the place where water is not in abundance. जोटी पानी माने पर्याप्त परिमाण नहीं सेठी भी एटा बढ़ी परिबो काहेकि ना जडे प्लांट्स रो लीव गुडा को थिक ता भीतर ऑलरेडी पानी प्रिजर्व हे कि थाए सेते में से कम पानी दरकार करे बढ़िबा पई. So number B is the right answer. Question number 10 and the last of this session. Use craft colors. They add color to our life and advertisement. Catchy slogans do not attract people. That's wrong one. The ultimate intention of catchy slogan is to attract people. People like dark colors. There is no sense of dark colors in this whole information. So both are incorrect one. Correct answer is option number D. आजिरो सेशन एटी हम समाप्त करियो. तो एतिकी इनफ नुहे एटा क्रिटिकल रीजनिंग अछि एतिकी इनफ नुहे हमें फंडामेंटल आइडिया आपको दे देलु. तापरे पैसेज सॉल्व कला बेले एई पर्टिकुलर ध्यान जदि रखिबे कि कनेक्ट हेला को आंसर होउची कनेक्ट हेला को न कनेक्ट हेला को आंसर होउनी ये सब जदि मु ध्यान रखि पारली देन इट्स फाइन राइट. सो दिस इज small try to give you an awareness about this topic statement conclusion. That's all about today's class. Thank you so much. Stay tuned to Vanik Smart Class. Thank you so much. Have a great time.